Hi everyone, this is your host Anur and I hope you are doing absolutely amazing. So if you all can hear me and if you all can just give me a thumbs up in the comment section so that I will know that yes, you all can hear me and we will start our session here. अगर मैं सबको सुनाई दे रही हूँ दिखाई दे रही हूँ तो प्लीज मुझे thumbs up दीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि हम सेशन स्टार्ट कर सके and I will quickly give you an introduction that what we're going to do today आज हम क्या करने वाले हैं इस चीज का भी आपको जल्दी से बताऊंगी तो come on ladies give me so I hope I'm visible now. Okay, am I visible now? अपने दिखाई I hope अपने दिखाई yes we are going to start very soon जल्दी start करेंगे just let me know दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है so that we start जब आपको बताया कि ये दिखाई नहीं दे रही तो आई होप आपको दिखाई दे रही है I was still not able to replicate the approach and perfect and identity. I have pinned myself when I deliver an audio on here. So I hope I'm not audible. Oh God, what is happening? Give me a Okay. Now tell me. Yeah. Am I audible now? अब मैं सुनाई दे रही हूँ? I don't know आज क्या हो गया है. कभी दिखाई नहीं दे रहा है, कभी सुनाई नहीं दे रहा है. मतलब पता नहीं क्या ही हो गया है. I hope I'm audible and visible now. Oh my God. Okay, finally. चलो. भगवान की कृपा हो गई. I am visible and audible now. Great. Okay. So hi everyone, this is your host Saloni here and I hope अब सभी को मेरी आवाज सुनाई भी दे रही होगी, मैं दिखाई भी दे रही होंगी सबको. Still not audible. Oh my God, what is happening? Why am I not audible? क्या करूं? Why am I not audible? Hello, hello. Am I audible now? Okay, ठीक है. So I will quickly give you an introduction of today's session कि आज क्या होने वाला है. हमारी trainer भी यहाँ पे है and I will introduce you to her also and उसके बाद we are going to start with the session. तो आज का जो session होने वाला है that is going to be taken by Dr. Krishna Purohit जो हमारी आज की trainer होने वाली हैं. So doctor, can you say a hi to everybody here? Everyone. Yes, hi everyone. Can you hear me? Yeah. We can hear you now. So I will quickly give them a little bit of introduction, what we are going to do today, and then we will start with the session. Okay? Yes, works. Oh, just give me a second. Okay. So yes everyone, I hope आप सबको सभी चीजें दिखाई दे रही होंगी, सुनाई दे रही होंगी. तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आज के सेशन में what we are going to do. So अब हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में. आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केक जो कि होने वाला है हमारा वॉफल कोन केक. तो जो वॉफल कोन केक होता है वो काफी इंटरेस्टिंग सा केक होता है. इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली आपने देखा होगा आइसक्रीम कोन्स देखे हैं जो वॉफल से बनते हैं. So we are going to take those and we are going to teach you how you can so we are going to teach you कि आप कैसे उस waffle को अच्छे से decorate कर सकते हैं using this syrup. Then we are going to show you how you can use how you're going to fill that waffle and how you're going to decorate it and cream it over it ताकि आपको एक beautiful सा आपका cone waffle cake जो है वो मिल सके. तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट होने वाला है. इसमें क्या होगा कि हम लोग एक बेसिकली एक
जैसे वॉफल कोन होते हैं वो लेंगे, उसको हम लोग डेकोरेट करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप उसमें लेयर्स को क्रिएट करते हैं, उसके बाद कैसे आप उसको डेकोरेट करते हैं एंड गेट योर ब्यूटीफुल वॉफल कोन्स. So also one more thing, remember that the recordings of the session will be, oh my god, Dr. Am I audible to you? Yes, you are totally Okay, audible. Sorry, what? Totally audible. Okay, I don't know why यहाँ पे मुझे बहुत सारे comments मिले that I'm not audible. So I was like, oh my god, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो yes, नहीं, you're audible. मूविंग फॉरवर्ड आई क्विकली लेट यू नो कि हमारे जो रिकॉर्डिंग होगा वो आपको यहाँ यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा पंखुड़ी ऐप के ऊपर. ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड अगर आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस कोर्स का पीडीएफ भी आपको पंखुड़ी ऐप के ऊपर मिलेगा. एंड जो इस कोर्स के बाद जो पिक्चर होंगी वो भी हम सारी की सारी पंखुड़ी ऐप के ऊपर अपडेट कर देंगे. आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं. सो ऑल द लिंक्स एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन जस्ट गो देयर एंड चेक इट आउट. ओके, so yes, without wasting any time, and I guess everybody is very excited here, so I will quickly forward it to Dr. Krishna here. Trainer, over to you. Hi everyone, I am Dr. Krishna Purohit and I am your trainer for today. Today I'm going to be teaching you to make waffle cone cake. So आपने I think ये dessert देखा होगा बहुत जगहों पे, but this is a very classic type of dessert because इसमें हम waffle cone के अंदर cake की assembly करेंगे. We are going to give some beautiful colored swirls on it. So when you look at the final product, you will feel like you're having an ice cream, like a waffle ice cream. But the filling is not going to be of ice cream. The filling is going to be of your cake, your any other filling that you want to do in the center, and you're going to have some beautiful colored swirls. Okay, so सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम किसमें बनाने वाले हैं. So I am going to be using these kind of cones. इस तरीके के मैं cones use करने वाली हूँ. You will get this at any ice cream shop. आप यहाँ वहाँ से कहीं से भी ये ले सकते हैं. Also, I take classes on making waffle cone at home. So if I get time, I will make a video and share it on YouTube soon. So इस तरीके के cones आप ले सकते हो. I have about 2 to 3 cones over here, and I'm going to be decorating the cone with some cake filling, with some any flavor that you want to give to your cake, and we're going to finally top it with a beautiful swirl. Okay, so first things first, सबसे पहले हम इस cone को थोड़ा pleasing to the eye, थोड़ा decorative बनाने वाले हैं. So उसके लिए what am I going to do? I am going to take some compound chocolate over here. So I am going to be taking my milk compound, Morde का milk compound यहाँ पे मैं लूंगी. आप चाहे तो आप dark compound, white compound, जो भी compound आपको चाहिए आप वो ले सकते हो. So I am just going to take a microwave friendly bowl, और उसमें I am going to be putting my milk compound, and now we are going to melt this milk compound in the microwave. Again, to melt the chocolate, you can either use a double boiler method on your gas, or you can use your microwave. You can just microwave it for 20 seconds and stir it. So I will just microwave this. Meanwhile, if you all have any question with regards to today's class regarding waffles, you can just ask me, because I'm going to have my pods on. So I'll just melt this and I'll be back. Okay, sure. So ladies, अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने अपना कोन ले लिया है, and now we have also taken a milk compound here. We are melting our milk compound in the microwave. You can also do this on a double boiler. So people who have question about double boiler, it's a very simple thing. You take a pan, fill it with water, take another bowl, put it over the bowl of water that you have kept below, and then switch on your flame, and then just melt the chocolate, and it is called as a double boiling way of melting your chocolate. For the microwave, you can just keep it in the microwave for around 20 seconds. Once you, after 20 seconds, just check if the chocolate is melted completely. That is absolutely fine. Take it out, you can use it. If not, keep it again for 20 seconds. Do not keep it all together for a minute. You will end up burning your chocolate. Okay? That's right.
So now if you have any questions, please let us know. कोई भी question है अगर अभी तक आपको किसी भी चीज में तो हमें बताइए. तब तक डॉक्टर कृष्णा जो चॉकलेट है वो माइक्रोवेव में मेल्ट कर देगी. Yeah, so I have melted my chocolate over here and this is what it looks like. So milk chocolate जो है वो हल्की सी, it's not really flowy like your dark compound. So it's going to be a little tight, but the advantage is most of the people, they like milk chocolate because milk chocolate tastes like your dairy milk. Okay, so I'm going to be using this. तो ये use करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मेरा waffle cone यहाँ पे लूंगी. I'm just going to take a bowl. Okay, और ये waffle cone के sides पे I'm going to cover it with the chocolate that I have melted. Okay, just going to apply the melted chocolate. So यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो चॉकलेट मेल्ट की है हम उसको साइड्स जो हमारा कोन के साइड्स हैं वहां पे अप्लाई कर रहे हैं. एंड यस जो आपका डार्क कंपाउंड होता है वो थोड़ा सा बिटर होता है एंड जो आपका मिल्क कंपाउंड होगा वो बेसिकली जैसे डेयरी मिल्क टेस्ट करती है बिल्कुल वैसा ही आपका टेस्ट करेगा. Right. So, and next I'm going to be using some sprinklers. So यहाँ पे जो hot chocolate मैंने कोन के sides पे लगाई है, I am just going to put these sprinklers so that the look just improvises like this. Just a moment. So you can see here we have taken some sprinklers और हम लोग उसी चॉकलेट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अपने sprinklers को. So Dr. Krishna, there's a question here. Yeah. How many days can we store this? आपकी जो केक की शेल्फ लाइफ होती है एग्जैक्टली उतनी ही आपकी वॉफल कोन की भी शेल्फ लाइफ होती है. सो लेट्स से कि आपने केक स्क्रैच रेसिपी से बनाया है जिसकी शेल्फ लाइफ 1 वीक है. सो ये कोन को आप इजिली 1 वीक तक स्टोर कर सकते हो. इट डिफर्स फ्रॉम द यू नो द स्पंज टू स्पंज. या आपने स्क्रैच रेसिपी बनाई है या प्रीमिक्स है तो उसकी शेल्फ लाइफ पे ये डिफर करेगा. Okay. Nikita, for your question, no, we have taken a ready-made cone here that you can find easily on any of the ice cream shops. If you want to learn it from the scratch, Dr. Krishna will be soon uploading a video about it on the YouTube. You can check it there also. Yes. Okay, so I'm sorry. Nothing, Dr. Krishna. आप बताइए. Okay, so this is the other cone that I'm taking. और उसके भी साइड्स पे आई एम जस्ट अप्लाइंग माय मेल्टेड चॉकलेट. यहाँ पे मैं अलग स्प्रिंकलर्स यूज करूंगी. सो फॉर द प्रीवियस आई हैड यूज्ड सम राउंड कलर्ड स्प्रिंकलर्स. इस तरीके के मैंने स्प्रिंकलर्स यूज किए थे जस्ट टू गिव अ वेरिएशन, जस्ट फॉर अ डिफरेंट लुक. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग सम डिफरेंट स्प्रिंकलर्स. यू कैन यूज दीज हार्ट्स. आई हैव दीज टाइनी लिटिल हार्ट्स. आई जस्ट शो यू हाउ दे लुक. Okay, these kind of sprinklers. So I'm just going to put it because chocolate मेरी अभी melted है. It is still hot, so it is easily the hearts and you know the sprinklers are easily going to stick to it. So make sure कि ये process आप थोड़ा fast करें क्योंकि अगर आपकी chocolate hard होने लग जाएगी, so your sprinklers are not going to stick to your cone, right? Yes. Yes, Rekha, for your question, yes, we are applying the chocolate on the outside of the cone and not on the inside. Because inside we are going to be filling, right? तो वो दिखेगा ही नहीं. If you want, you can apply, but inside we are going to fill in. Okay, so Dr. Krishna, there's a question here. That for storing, do we need to cling wrap it or we can just store it like that? You will not be able to cling wrap because ऊपर swirl आएगी और आप cling wrap करोगे तो वो swirl तो whipped cream की है तो वो खराब हो जाती है. So इसको store करने के लिए आपको जो आपके cupcake के जो boxes होते हैं वो boxes use करना पड़ेगा. With a deep cupcake का जो box आता है you will have to use that. उसके cupcake के जगह पे you can just place this and this easily stays. That's how you can store it or dispatch it. Okay. So that means if we want to dispatch it या फिर हमें कहीं भेजना है तो उसके लिए भी हमें भी वो cupcake वाले stands use करने पड़ेंगे.
Yes, cupcake वाला ही use करना पड़ेगा. Otherwise, if you just keep it, your cream, your everything will just get spoiled, right? Yes. Yeah. So I am just putting these sprinklers all over. Now I am taking a particular type of sprinkler. आपको जो sprinklers आपके पास available हो, आप वो use कर सकते हैं. So that's the first one. This is my second one. So दोनों ही पे मैंने apply कर दिया है, and this is what it looks like right now. So आपने देखा जैसे ये plain दिख रहा था, it was looking something like this, and we have just given it some pretty appearance, right? Just by putting sprinklers and melted chocolate. So अभी मैं क्या करूँगी? I'm just going to let this set in the fridge for about 10 minutes. क्योंकि chocolate set हो जाएगी, उसके बाद में we can do the next process. So are we clear with this? The ones who are attending, अभी तक जो भी मैंने किया, if you all are clear, just send me a thumbs up. So we will proceed to the next step over here. So yes ladies, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें बताई हैं, अगर आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हमें प्लीज एक थम्स अप दीजिए. एंड तब तक हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो सेट हो जाए. ओके ओके. So तब तक Dr. Krishna, there are few questions here. Yeah, let's So there's a question that ma'am, एक जो waffle cone होता है उसका basic price कितना होता है? Waffle cone, अगर without the decoration, if you're buying, I think it's 15 or 20 rupees if you buy from outside. Yes. Okay. Yes रेखा, आपको ये बहुत ही easily, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी बड़ी बेकरी के सेक्शन में आपको ये बहुत ही easily मिल जाएगा. Easily And yes, मिल they are not very expensive. 15-20 रुपए के आते हैं. You can just easily make these and then sell it for a good price. You'll make profit. Yeah, and these ones are still bigger. If you see, the width is little bigger. You also get the regular ones जो I think you see as hawkers आप road पे देखेंगे, वो वाले छोटे cones होते हैं. So you can make on the छोटा or the बड़ा cone depending on your requirement. Now this is a very eye pleasing dessert. हम already cakes बनाते हैं, हम cake pops बनाते हैं, we do brownies, we do cakesicles, etc. But this is a very eye pleasing dessert because ये अगर आप किसी को दोगे, like let's say that you have guests over, आपने ये for example 10-20 बना के आपने फ्रिज में स्टोर कर दिया, and then dessert time में when you're serving, of course this is very eye pleasing because they'll be thinking, oh, this is an ice cream, but when they have it, they will actually understand it's a cake which is in the form of an ice cream. So it's very eye pleasing and it's beautiful, and the best part is this is homemade. If I can make it at home, I'm sure anybody can make it at home. Like all the bakers out there, this is a very, even if you're a baker, even if you're a beginner, anybody can make this. It is so simple. Yeah. Okay. So yes, Dr. Krishna, हमें काफी सारे thumbs up मिल चुके हैं. That means everything is clear till now. We have also got some questions out here. Okay, let's take them. So there's a question that ma'am, I stay in a very moist climate and here जो भी wafers होते हैं, they get soft very easily. So what can I do to avoid it? So one thing you can do is कि आप immediately आपके box में डाल के आप इसको box close करके you keep it in your fridge. Don't keep it open in the fridge because अगर आप fridge में open रखोगे तो उससे fridge में जब तक रहेगा it's going to be crisp and hard. जैसे ही आप बाहर निकालोगे it will just become soggy. But with waffle cones it's a very very common mistake. एक दूसरे जो cones आते हैं with the thin lining, वो वाले काफी जल्दी soggy हो जाते हैं. But with waffle cones they don't become soggy very quickly. But again, अगर आप cones में आपने decorate कर दिया है, then make sure that you consume it within 1 or 2 days. Okay, you can just make like these. ऐसे आप decorate करके आप ready आपके freezer में store कर सकते हो. And then let's say कि आपको कल deliver करना है या कल किसी को gift करना है, तो आप आज के दिन preparation करके just keep it in the box in your fridge. So that's how you can store it. You can just do this decoration पहले से ही, and then the final assembly you can do on the last day. I will just do the final assembly and show you all, so you will understand what I'm talking about. Okay. Okay. Yeah. So I'm going to be decorating 2 waffle cones over here today. So the first one is going to be of lotus biscoff. I'm just going to give it a lotus biscoff flavor, and the other one I'm going to give a hazelnut flavor. So I'm going to give a hazelnut flavor. So y'all will just see how I do it.
सो अगर आप में से किसी को भी केक बनाना आता है, यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. द अदर्स जिन्हें नहीं बनाना आता, इट्स स्टिल ओके. आपको क्या करना है, जैसे केक आपने कभी खाया होगा, काटा होगा, सो यू नो दैट देयर इज अ स्पंज लेयर, there's a filling layer, there's another sponge layer, another filling layer. So that's how you assemble your cake. वैसे आप stack करते हो cakes को, right? So इसमें भी हम same उसी तरीके से करेंगे, बट इसका टेक्निक थोड़ा अलग इसलिए होगा बिकॉज हम वो स्टैकिंग हमारे कोन के अंदर करेंगे. सो आवर कोन इज ट्रायंगुलर. सो ऑफ कोर्स वी डोंट एग्जैक्टली नो कि डायमीटर कितना है हमारे केक का. सो हम क्या करेंगे, हमारा केक स्पंज लेंगे. लेट्स से कि आप रेगुलर केक स्पंज ले सकते हो फ्रॉम द मार्केट विच इज इजिली अवेलेबल. आप यू कैन जस्ट गो टू एनी बेकरी शॉप, बाय योर स्पंज, और यू कैन मेक इट एट होम. If you don't know how to make sponge, it is still okay. You can just use your biscuits. आप आपके ओरियो या कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स का आप क्रश कर दो एंड देन यू पुट इट एट द लेयर ऑफ योर स्पंज. और फिर बीच में जो मैं लेयरिंग करूंगी वो आप देख पाएंगे. So I am going to use a sponge that I had made from premix. So I just have some leftover sponge. So I'm going to be using this. So abhi I don't know कि इसका diameter क्या है. So what am I going to do? The first layer, the first filling that I'm going to put at the base. आपने कभी cornetto खाई होगी. So cornetto का जो last bite आता है वो हमेशा थोड़ा चॉकलेटी होता है. There is always chocolate inside over here. So हम क्या करेंगे, we are going to start. Let's say that you're eating it. तो आप ऊपर से खाएंगे, जब आप last bite खाएंगे, you need the flavor of whatever you're eating. वो आपके मुंह में last में रहे. So I am going to be filling the base with my lotus biscoff because I'm doing a biscoff. Okay. So I'm just going to take my spoon. Just going to take my biscoff. Okay, I'm just going to take my biscoff and put my biscoff at the base. यानी जो नीचे की तरफ है मैं बिस्कॉफ डाल दूंगी और उसके ऊपर मैं मेरी लेयरिंग स्टार्ट करूंगी. ओके, आई एम जस्ट पुटिंग माय बिस्कॉफ सबसे नीचे. सो ये आप सबसे लास्ट में खाओगे. सो यू विल गेट अ नाइस किक ऑफ बिस्कॉफ. दैट विल बी योर लास्ट bite. Okay, so I'm just going to push it inside. It easily just slides in because it's like a spread, it's like a paste, so it just easily goes in. So this is my basic base layer. Okay, this is my base layer. ये हो गया मेरा फर्स्ट कोन. जो मेरा दूसरा कोन है उसका मैं बेस लेयर करूंगी ऑफ माय हेजलनट स्प्रेड बिकॉज आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माय हेजलनट. ओके, सो आई एम गोइंग टू बी टेकिंग द अदर कोन और उसमें आई एम जस्ट गोइंग टू टेक माय हेजलनट स्प्रेड एंड सी इट जस्ट इजीली गोज इन. यू कैन सी हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है. हम लोगों ने अपना पूरा जो कोन था उसको डेकोरेट कर लिया. एंड हम क्योंकि दो डिफरेंट फ्लेवर्स के यहाँ पे कोन्स बनाने वाले हैं, सो वी हैव टेकन वन एज लोटस बिस्किटी, वी हैव टेकन अनदर एज. And since if you have eaten anything, you know, like cornetto or something, you always have an end of chocolate, you know, the hard chocolate that we all love. So we are going to do the same thing here. Why? Because we want the last bite to have the most taste of whatever you are making. So that is why in the end or the last layer of our cake is going to be the spreads that we are going to use. So for spreads, we have taken here lotus biscuity, and for the hazelnut, we have taken the hazelnut spread, and we just put it in the end of it. या सो यहाँ पे एंड में आप देख सकते हैं और इसमें हमारा बिस्कॉफ है. अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट अ केक लेयर. लाइक आई सेड, आपको बिल्कुल डरना नहीं है. अगर आपको केक बनाना नहीं आता है, यू कैन जस्ट यूज योर बिस्किट्स. अगर आप लोटस बिस्कॉफ फ्लेवर बना रहे हो तो उसमें आप लोटस बिस्कॉफ के बिस्किट्स को क्रश कर दो. आप दरदरा उसको पीस सकते हो या आप ग्राइंड कर सकते हो इन योर मोटर और पेसिल, और यू कैन जस्ट क्रश इट विथ योर हैंड एंड देन पुट योर लेयर. So it's absolutely okay. Even if you don't know to make sponge, it's completely okay. Since I have sponge, I'm going to be putting my sponge. So this is my biscoff. तो सबसे पहले मैं biscoff में क्या करूंगी, मेरा जो sponge है, I'm just going to be putting my sponge layer. Now आपको layer कितनी thick या thin करनी है, that is your call. How thick or how thin you want, it can be your call. Okay, so this is my sponge layer that is inside. अब आप जैसे केक बनाते होंगे तो केक में आप स्पंज लेयर डालते हो, आप उसमें थोड़ा सा उसको या फिर आप शुगर सिरप डालते हो या आप वाटर डालते हो.
So I am going to take some water in a spray over here, और मैं हल्का सा मेरा जो स्पंज है उस पे मैं स्प्रे कर रही हूँ, जस्ट स्प्रेइंग वेरी मिनिमल, बहुत ज्यादा नहीं करना है वरना आपका मेल्ट होने लग जाएगा, आपका जो कोन है वो सॉगी हो जाएगा. ओके, सो आई हैव जस्ट पुट लिटिल ऑफ माय वाटर. सो व्हाट डिड वी डू, हमने यहाँ पे सबसे पहले बेसिक बिस्कॉफ की लेयर डाल दी, फिर हमने थोड़ा स्पंज डाल दिया और स्पंज को हमने सोक कर दिया. नेक्स्ट व्हाट एम आई गोना डू, आई एम गोना टेक माय बिस्कॉफ अगेन बिकॉज बिस्कॉफ फ्लेवर है. दोबारा से मैं बिस्कॉफ लूंगी. So here you can see हम लोगों ने सबसे पहले नीचे बिस्कॉफ डाला था, उसके ऊपर हम लोगों ने अपना चॉकलेट स्पंज जो है वो डाला. एंड क्योंकि हमारा चॉकलेट स्पंज जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई ना लगने लगे, इसके लिए हम लोग जैसे हमेशा कोई भी केक बनाते हैं तो उसके ऊपर स्पंज के बाद एक लेयर हम लोग वहाँ पे, नॉट अ लेयर बट हम एक बार उसको कोट करते हैं विद आइदर शुगर सिरप और मे बी विद what you say with water. तो वैसे ही सेम यहाँ पे हम लोगों ने वाटर भी डाला हुआ है ताकि हमारा जो केक है वो बहुत ज्यादा ड्राई ना लगे. सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बिस्कॉफ की लेयर डाल दी. बिस्कॉफ के बाद में दोबारा से मैं यहाँ पे केक स्पंज लूंगी एंड अगेन आई एम गोना पुट माय स्पंज लेयर इनसाइड. Okay, this is my sponge layer. And what am I going to do? I'm going to soak it again. Yes, Saloni. So Trina, there's a question here that ma'am, can we put brownies also in it? Yes, you can make your own variations. आप brownies डालो, आप biscuits डालो, you put your cake sponge, whatever you want to put, you can put inside. And the best part is कि ये आप leftovers से बना सकते हो. Let's say कि आपका केक ऑर्डर था, आपका कुछ केक स्पंज बच गया, जो ऊपर का लेयर होगा, नीचे का लेयर होगा. Or you can say that you had made brownies, thoda left over है, nobody wants to just eat too much brownie. You can just give it in a different appearance and you can just serve them. So this also tastes really nice. Okay, and this is like an advanced version in a smaller bite. क्योंकि हम cake खाते हैं, so cake we have to make in larger chunks. ये I think it is wholesome for one individual. One individual can easily have this. Okay, so I'm going to have the next layer of my Biscoff and apply it again. So I am using the flavor Biscoff. आप चाहो वो flavor यहाँ पे use कर सकते हो. You can ice with your regular whipping cream also, with your regular ganache also, with your spread. I'm using hazelnut spread. आप peanut butter spread use करो. You can use coconut. You can do any filling you like. Okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिस्कॉफ फ्लेवर जो है वो यूज कर रहे हैं. बट इफ यू वांट यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक गनाश आल्सो, यू कैन गो फॉर द व्हिपिंग क्रीम आल्सो, you can go for the buttercreams also. It is up to you. You can go for whatever you want to and you can make it your version. Okay? Yes. Definitely. Whatever you want, you can do and you can put how much ever you want. Now, next, I'm going to be putting my sponge. I'm going to be putting sponge till I reach at least, I can say that 3/4 portion of my cone opening. So let's say that this is going to be my last sponge layer. Okay, so Dr. Krishna, there's a question here. What is a Biscoff? Biscoff is an American biscuit. It's a type of a biscuit that got really popular last year. So इस तरीके का आपको मिलता है. This is a spread. This is made from the Biscoff biscuits only. So जैसे आपके Parle G है, and we've been eating Parle G since eons, and most of you all still eat it. So वैसे ही Lotus Biscoff came into existence about 1 year ago, and people really like the taste of Biscoff. And ever since then, dessert making में any superior flavor you want, you always opt for Biscoff. So जैसे Nutella है, वैसे Biscoff है, but it's a kind of Biscoff. आपने कभी भी अगर nice biscuits जो coconut और हल्का सा sugar crystals वाले जो nice biscuits खाए होंगे, so your Biscoff more or less, I'm not saying it tastes like that, but it usually tastes closer to that. Okay, so this is my sponge, and now I'm just going to do my final spraying. So yes, okay, ये fine. आप चाहो तो आप ये कर सकते हो,
बट अगर आप आइसक्रीम ऐड करना चाहते हो तो आप ट्राई करना कि आप जो फजी ब्राउनीज होती है ना, आप वो यूज करोगे। बिकॉज आप अगर ये नॉर्मल जो आपका स्पंज होता है, केक स्पंज, जिसके ऊपर अगर आप आइसक्रीम डालोगे ना, तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट अगर आप फजी ब्राउनीज के साथ आप आइसक्रीम ऐड करोगे इसमें, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप ये चीज कर सकते हो। Right. So this is my other cone. This is the hazelnut cone that we're making, जिसमें मैंने hazelnut base पे डाला था. अभी again, whatever we've done for the other cone, I'm going to just repeat the procedure. But इसमें सिर्फ biscoff की जगह मैं hazelnut की fillings डालूंगी, right? So I'm going to take my sponge, just shove my sponge inside. Okay, my sponge is inside. I'm going to soak it again. थोड़ा सा soak कर दिया. Now I'm going to be taking my hazelnut and I'm just going to be putting my hazelnut. So this is a very nice revision session. अभी जो हम कर रहे हैं, Yes. आपका एक रिविजन सेशन हो सकता है कि अगर किसी का कुछ मिस हो गया है, कुछ छूट गया बीच में, तो ये आप उस रिविजन कर सकते हो। जो प्रोसेस हम लोग ने अभी तक किया था लोटस बिस्किट वाले में, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अगेन कर रहे हैं। हमने बस इसकी जगह पे हम जो हमारा हेजलनट फिलिंग है, हम वो यूज कर रहे हैं। Yes, that's right. So यहाँ पे मैंने मेरा नेक्स्ट स्पंज लेयर डाल दिया, थोड़ा सा मैं सोकिंग कर रही हूँ. I'm going to be taking my hazelnut again, putting in my hazelnut layer. Okay, my hazelnut layer. Now this is going to be my last layer of the chocolate sponge that I'm going to use. मैं यहाँ chocolate sponge use कर रही हूँ, आप vanilla sponge भी use कर सकते हो. कंपल्सरी नहीं है कि आपको इसी में बनाना है. लाइक आई सेड, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू आइडियाज कि आप ये नहीं तो वो, कुछ ना कुछ आप आपका कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो इन मेकिंग दिस, राइट? सो आई एम जस्ट गोना बी pressing it. Okay, and now I'm going to be spraying it with some water. So ये दोनों ही हमारे जो कोन्स है वो यहाँ तक रेडी हो गए. If you see, they're ready till here. This is what it is looking like, right? So I'm just keeping them, and now we are going to do our preparations for the final decoration, that is topping it with some beautiful colored swirls. Okay, so एक जो हम कोन करेंगे, we are just going to take a plain color, कोई भी plain color से हम swirl बनाएंगे. जो दूसरा हम जो कलर करेंगे, we will just do a colorful swirl. Okay, so सबसे पहले हम plain swirl बनाते हैं, so you will know कि exactly swirl कैसे बनती है. फिर हम colorful swirl कैसे बना सकते हैं. I'm going to teach you that as well. So first things first, I'm going to take a piping bag over here. Piping bag में I am going to take the nozzle 1M. I'm going to be taking the nozzle 1M. It's a closed star nozzle. It's a closed star nozzle, and I'm going to take the large or the big size, and I'm just going to put it in my piping bag. Okay, so this is ready. और मैंने मेरे ग्लास में वो पाइपिंग बैग लगा दिया है. Now I'm just going to take some whipped cream. यहाँ पे मैंने whipping cream ली है. This is my plain white whipping cream. This is a non-dairy whipping cream by Tropolite. आप whipping cream भी ले सकते हो, ganache भी ले सकते हो to top it. और you can take ready whipping cream also. I think Pillsbury Pristine की आपको ready whipping cream पे मिलती है. Or you also get the whipping cream bottles. अगर आपको cream whip नहीं करना है and all that, nowadays you get the whipping cream bottles. So आपको बस उसको shake करना है and you can just give it any swirl that you like, right? But ये actually मैंने घर पे whip किया है. So this is my regular whipping cream. So I'm going to be taking this, और इसमें मैं डालूंगी a color. So now who wants to suggest कि हम कौन सा color यहाँ पे use करें? Any suggestions कि आपको कौन से color का swirl देखना है यहाँ पे? One is going to be a multicolor. So उसमें we will just take a mixture of all the colors. जो हमारा एक कोन है उसमें हम कौन सा color करें? Who wants to suggest? So yes, ladies, let us know कौन सा color आप लोग देखना चाहेंगे. Yes. And Dr. Krishna, तब तक there is this one question that
that ma'am, can we put some tinned fruits also in this? Yeah, you can put tinned fruit or you can put fresh pulp. जो फिलिंग मैंने मेरे स्प्रेड से की है which is just ready made, आप आपके घर पे कोई भी, let's say mango is seasonal, तो मैंगो का पल्प बना सकते हैं. यू कैन जस्ट डू अ फिलिंग ऑफ दैट. वनीला स्पंज रखिए, मैंगो का पल्पी लेयर डालिए, वनीला करिए, देन पल्पी लेयर करिए, आप उससे भी कर सकते हैं. राइट, सो आपका मैंगो फ्लेवर्ड हो जाएगा. एंड देन उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट मेक अ नाइस येलो swirl और थोड़े मैंगो के चॉप्ड पीसेस आप ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं विथ लिटिल येलो स्प्रिंकलर्स. दैट आल्सो लुक्स वेरी प्रिटी. Yes. Yeah. So yes, ladies, let us know. अभी तक मुझे पिंक का ऑप्शन आया है यहाँ पे. ओके, पिंक मैक्सिमम वोट्स किसके लिए है? वी विल टेक दैट कलर. Okay. Look, brown is like कि brown तो आपका फिर गनाश हो जाता है ना, तो वो भी Yeah. will not Let's go for take that. some Multicolor color. हाँ, multicolor तो we are going to do. So I guess pink is the one that we have got here. Okay. So let's take pink. Okay, so I'll take pink over here and we will finally top it with these sprinklers. I'll use these sprinklers. So for pink, I'm going to be using my pink cone with hearts. Okay, so इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले I'm going to take the pink color. This is by the brand Bake Heaven. This is my pink color. So मेरी whipping cream में I'm just going to put about 1 drop of my pink color. I'll just take my spatula, mix it to make a nice pink color here. So you can see here, हम लोगों ने यहाँ पे pink gel colors लिए हैं. Okay, remember ladies, we have taken gel colors here, not the liquid colors. Okay, so हम लोगों ने gel color लिया है and हम लोगों ने उसको अपने whipped cream में add कर दिया है यहाँ पे. Yes. So यहाँ पे हमने pink color prepare कर दिया है. Now remember the piping bag जिसको हमने glass पे cover किया था. So I am just going to be taking my cream, my whipped cream. I'll just put it in my piping bag. So आपने देखा मैंने piping bag में किस तरीके से डाला. I have just covered my piping bag on the glass and then I have transferred my whipping cream. तो आप देख सकते हैं कितना easily आपका कोन बाहर आता है. नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो what you end up doing is आप कोन लेते हैं और कोन को आप इस तरीके से होल्ड करोगे और फिर आप इस तरीके से डालोगे तो आपके पाइपिंग बैग का टिप गंदा होता है, हाथ पे लगता है एंड ऑल ऑफ दैट. सो इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम हमारे ग्लास में डाल देते हैं और इस तरीके से हम वी जस्ट मेक सम स्पेस. सो दिस इज सो मच इजियर to put or to load your whipping cream in your piping bag, right? So my piping bag is ready here and I am just going to be doing the swirl. Now, are you all excited to see how the swirl or the final look of your cone is going to look like? If yes, let us know. I'm very excited for it. So let us know, ladies. आप लोग कितने ज़्यादा excited? मुझे बड़ा ही मजा आता है डॉक्टर रोशनी की क्लासेस करने में. So I'm really excited for the final look now. That's so sweet of you, lady. So Pyle, instead of the whipping cream, you can go for the ganache. You can go for the butter creams. You can go for maybe whipped cream. तो है ही हमारी. Or you can also go for ready whipping creams आती है. You can use that. You can use that also. So बहुत सारे options हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं. And yes, I guess everybody is really excited here, doctor. So I think we can go for it. Yes, let's do it. So I'm just going to show you all from a little close how our swirl is going to be looking like. Okay, so swirl बनाने के लिए हम क्या करेंगे? We are just going to press our piping bag and we are just going to rotate it. हम सिर्फ round करेंगे till the top. So let's see how I do it. So I am just going to be pressing, making a circle, making one more circle. ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रोजेट जैसा बना दिया है. Now I am going to continue this all over the top. Okay,
I think we're clear with this. So I'm just going to continue this all over the top. I'll just reduce the brightness a little bit so that it's, yeah. See, so like this. And now I'm just going to continue this all over the top. So is tarike se I'm just going to be rotating. Center cover किया. वापस sides में हम आएंगे. Like this. Just continue, and like this. Okay? This looks so pretty. Yeah, it's very pretty, and more than looking pretty, it will taste also really nice because the flavors that we've taken is really amazing. Okay, so इस तरीके से हमने ये swirl बना दिया है. And now, like promised, I'm going to be using these beautiful sprinklers. And we're going to just put these sprinklers just to finally finish the look of our waffle cone. So I'm just going to be taking these sprinklers and I'm going to be putting. आप यही वाले sprinklers भी finish करने के लिए use कर सकते हो. That is your call. It looks so pretty. If somebody ever offers me something like this, oh my god, it's going to be amazing. I know. Like I said, it is eye-pleasing, it's beautiful, and it is wholesome. It is something that I've just made in front of you all like within no time. So you see how pretty this looks in appearance also and 100% in taste also. Okay, so we've made this beautiful first cone. हमारा first cone यहाँ ready है. And the other cone, like promised, we are just going to do some beautiful colored swirls. इसी तरीके का हम swirl करेंगे, but मैं आपको color swirls कैसे बनाते हैं, I'm just going to be teaching you that as well. So I'm just keeping this on the side. Now next, what am I going to do? मैं इसके लिए color swirls बनाने के लिए I'm just going to be doing some preparation. So preparation के लिए सबसे पहले I'm going to be taking my butter paper. आप cling wrap भी यहाँ पे ले सकते हो, or you can take a butter paper, whatever you like. Okay, so I'm just going to be taking a butter paper, 1 hand size. इतना butter paper यहाँ पे मैं use कर रही हूँ. So यहाँ पे you can see we are going to start with the colorful whipped cream here. हम जो हमारी colorful whipped cream होगी उससे start करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे butter paper जो है वो लिया है. Right. Okay, so butter paper में हम यहाँ पे colors assemble करेंगे. तो colors assemble करने के लिए I'm just going to be taking my bowl. I'll just take little by little whipping cream. पहले यहाँ पे मैं थोड़ी whipping cream ले रही हूँ. Just taking very little. You can take your bowls also. You can just take your bowls. You can take different bowls. And you can make different color. So सबसे पहले यहाँ पे I'm going to be making the color yellow. Let's go from light to dark. So I'm just going to take my color yellow. This is again by Bake Heaven. So I will just put about 1 drop of this color. Okay, 1 drop. And I'm going to be just mixing this to get a beautiful color. This is a good technique if you want to make cakes or swirls or cupcakes. So this is also something nice that you'll get to see today. So यहाँ पे हमने yellow color बना दिया, मैं इसे side में रख रही हूँ. I'm going to take other bowl, जिसके अंदर I'm going to be taking more whipping cream. Okay, just taking little more whipping cream. इसमें I'm going to go 1 shade dark, यानी कि I'm going to be taking the orange color over here. Again, the colors that I'm using are gel colors. You can use liquid colors also, but liquid colors हल्के pastel होते हैं. Gel colors are comparatively darker. So if you want a vibrant look, you should go for gel colors. Okay, 1 drop of orange. So हमने अभी तक लिया है yellow. We have taken orange then. Oh Yes. my god, I'm loving them already.
मुझे वैसे भी कलरफुल चीजें बड़ी पसंद है और ये तो इतना ही कलरफुल हो रहा है ऊपर से इतना ब्यूटीफुल फ्लेवर लाइक ओ माय गॉड. Yes. So यहाँ पे हमारे 2 colors ready हो गए हैं. Next, I'm going to take another cup and I'm going to be taking the color. Let's take lavender. I'll take the color lavender over here. Again, this is a gel color. Purple color मैं ले रही हूँ. I'll just take little cream. Lavenders I feel are बहुत ही pretty colors होते हैं एकदम. लैवेंडर इतना प्यारा कलर की अगर पूरी दुनिया लैवेंडर कलर की हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. Okay, so for you the sky is lavender. Yeah. Like they say the sky is pink. Yeah, for me it's lavender. Oh, that's nice. So अगर आप इसमें 1-2 drops और डालेंगे, this will just turn out to be purple. So you can decide which color you want. I've just put 1 drop so that I think I get a decent lavender color. Just taking a little more cream inside this. So yes, ladies, we hope आप लोग को अभी तक जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें समझ में आई होंगी एंड आपको ये सब चीजें जो देख रहे हो ये सब देख के बहुत मजा आ रहा होगा. मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है एकदम आई प्लीजिंग सैटिस्फैक्टरी सा है ये सब. You all tell Yes. us, कैसा लग रहा है? Yes. And now the next color that I'm going to be making is going to be the color blue. Let's take blue or let's take green. Let's take the color green. So I'm going to be taking some forest green color over here. So taking my more whipping cream और इस whipping cream में I'm just going to be adding the green color. Just 1 drop should be good. Yes, We Ryan, got- absolutely correct. This is great for kids party. Even I guess कोई भी party हो उसमें सब में अच्छा लगेगा ये. सब. Yes, this has become pastel. I'm just making it a little darker. Taking a little more whipping cream. और pink हमारे पास already है. Let's not forget that we already have pink. So we have a good combination of 5 colors. That's yellow, let's say orange, lavender, and a little bit of mint green color here. मैंने यहाँ पे colors लिए हैं. Whatever I had, you can choose any colors you like. Okay, now next, what am I going to do on my butter paper? I am going to be putting these colors one by one. So you'll just see how I do it. So I'm just going to be taking the yellow color first. Just going to be taking the yellow color और yellow color को मैं piping bag में in a straight line, I will just spread it. Just take some more. And just spread it. Next, I'm going to be taking my orange color. Likewise, मैं orange को भी यहाँ पे yellow के ही तरह I'm just going to be spreading it. So you can see जो भी colors हम लोगों ने अभी तक create करे हैं उनको हम लोग ऐसे straight line में spread कर रहे हैं. कहाँ पे? जो हम लोगों ने butter paper लिया था. आप चाहो तो butter paper ले सकते हो, आप चाहो तो cling wraps ले सकते हो, जो भी आपके पास easily available है आप वो चीज ले सकते हैं यहाँ पे. Yes, that's right. So I'm just going to be spreading the lavender. I feel this is such a good way of decorating. अगर आप कोई केक भी बना रहे हो किसी के लिए तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है आप डेकोरेट करने का भी. Yeah, that's right. So lavender के बाद I'm just going to be taking the pink color. So यहाँ पे मैं pink color का भी एक line release कर रही हूँ. So we've already taken, if you can see, we've taken yellow, orange, lavender and pink. और जो हमारा green है I'm going to be putting on the other side.
So I'll just take my green also and put it next to my yellow. It's already looking very pretty. Like the color combinations has come so pretty. I cannot even tell you. Yeah, जी बहुत Thank अच्छा you, लग रहा है. Saloni. Thank you, Saloni. That's so sweet of you. So just gonna put this. So whatever I have left over in my bowl, I'm just using it all. I have a little bit of yellow. So the colors are a little bit of, a tinge of pastel, a tinge of vibrant, and all together it's just going to look really beautiful. Okay, so I'm just going to keep all of this aside. Now, what am I going to do? ये colors हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं. The colors are ready. And now what am I going to do? I'm going to take another piping bag. मैं एक और piping bag ले रही हूँ. I'm just cutting the tip of it. And here I am going to use another nozzle over here. You can use the same nozzle. You can use the 1M nozzle, but because we've already used the 1M nozzle, so I'm going to be using the 2D nozzle over here. I'll just use the nozzle 2D. Yeah. So I'll just use the nozzle 2D. Okay. और मैं इसे डालने वाली हूँ मेरे piping bag में. Okay, so this is in my piping bag. और मैंने आपको जैसे बताया हम वैसे हमारे ग्लास को इस तरीके से कवर कर रहे हैं. And now what am I going to do? I am just going to take all the colors that I had prepared. I am going to be putting that in my piping bag. So इसे मैं piping bag में कैसे डालूंगी? I am just going to roll it like this. इस तरीके से मैं उसको roll कर रही हूँ. Okay, just roll it. इस तरीके से roll कर दिया हमने. और फिर मैं यहाँ पे tip पे एक cut दे दूंगी. I'm just going to give a cut at the tip, and I'm going to put the roll in my piping bag. I hope this part was clear. So आपका cone आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है. It has so many colors. Okay, understood this part, everyone? Do we proceed in making the final look or the swirl? Yes, doctor. I guess अभी तक की सारी चीजें clear हैं. Yes, ladies, let us know. I hope अभी तक सब कुछ clear होगा. Yes. So let's make the swirls now. Okay. Yeah. So I'm going to be taking this waffle cone. और जैसे हमने हमारा previous cone किया वैसे ही कर रहे हैं. But I'm just going to use a 2D nozzle. And what am I going to do? जैसे मैंने उसमें circle बनाया press करके. So I'm just pressing. And I'm just going to make a circle. Do you see how pretty the colors are looking? This is looking so pretty. Oh my god. Yes, it looks really pretty. Yes. Okay. Yes, it's looking absolutely amazing, Dr. Krishna, I must say. Yeah, the colors have come out to be so beautiful and vibrant. Yes, मतलब एक साथ तो मतलब अलग ही level सुंदर लग रहा है. Yeah, see all the shades are coming out nicely. So now what am I going to do? I'm just going to go all the way to the top. इस तरीके से पहले मैं outer border कर रही हूँ. Just going in the center, continuing on the outer border. Keep continuing, and that's the end. Right? Do you see how colorful, how pretty it looks? So every side has a different color and all the colors are merging so well.
isn't it? Yes, it looks amazing, like amazing. बहुत ही खूबसूरत है. Yes. Yeah, so these are the cones that we've made. और जो हमारा we are not going to be partial to this cone just because हमने इसमें hazelnut use किया है. तो हम इसमें भी sprinklers लेंगे like any other cone. So I'm just going to be using few golden pearls over here. थोड़े golden pearls लूंगी, थोड़े silver pearls लूंगी. It will look very elegant. So I'll just place few pearls. Yeah, if you can see the pearls, it's just a few pearls. And then I'm going to take some silver pearls as well. Yeah, just taking some silver pearls and just going to be putting some silver pearls also. So it just enhances the look. आप देखेंगे कि जैसे ही हमने sprinkler डाला, it just sort of enhances the look, right? Yes, it looks so pretty. Yeah, it looks like a unicorn horn, right? Yeah, exactly. Yeah, so you can use this. Or if you want, you can finally top it with some pink sprinklers. Just minimal. Like very little. आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने sprinkle किया है. And if you want, what you can do is you can just take some glitter. So I have some edible glitter over here. I have some edible shimmer red glitter. So I'm just going to be taking that. Okay. Up silver, golden, whichever color you want, you can use. I'm just going to be using some red shimmery glitter. And just going to be putting very minimal of that. So you can see उस पे हल्का सा shine आ गया है. Yes, we can see that it's visible. Yeah, very minimal. Not a lot because it will just let the look of the colors go off. So बहुत थोड़ा थोड़ा सा I have put all over. Right? So these are the waffle cones that we've done today. One is of a Biscoff flavor. The other one is of the hazelnut flavor. To start with, हमने पहले सबसे पहले chocolate melt करके sides में लगा के sprinklers attach किए. We just kept it in the fridge for 10 minutes. Next हमने हमारे जो let's say कि हमने एक में Biscoff लिया है तो Biscoff flavor हमने लिया और जो हमारा cone का base है हमने थोड़ा Biscoff डाला. फिर हमने थोड़ा हमारा स्पंज जो हमने हाथ से ही थोड़ा सा उसको ग्राइंड किया एंड वी जस्ट पुट दैट लेयर. थोड़ा सा सोक किया, देन वी पुट द बिस्कॉफ लेयर अगेन, स्पंज लेयर अगेन. हम यहाँ तक लाइक लेट्स से दैट 3/4 हमने फिल कर दिया विथ आवर स्पंज. एंड देन जस्ट टू फाइनली टॉप इट हमने व्हिपिंग क्रीम ली, उसमें हमने हल्का पिंक कलर डाला एंड वी टॉप्ड इट ब्यूटिफुली विथ अ swirl and some colored sprinklers. So this is our Lotus Biscoff waffle cone cake. The other one हमने बेस पे डाला है हमारा hazelnut spread. So थोड़ा बेस पे hazelnut spread है, फिर वापस आपका chocolate sponge layer है हल्का सा soaking के साथ. Then I have taken my hazelnut again. Then I have taken my spread again. इस तरीके से मैंने इसे भी 3/4 fill किया. और जो ऊपर का swirl है उसके लिए मैंने I have just taken 5 bowls. उसमें अलग अलग colors mix किए. On a butter paper I just put everything straight. And then just to finally top it मैंने उसे मेरी पाइपिंग बैग में डाला with the nozzle 2D और मैंने इस तरीके से ब्यूटीफुल सा उस पे swirl बना दिया. And just to finish it मैंने edible glitter और sprinklers use किए हैं. So these are the 2 flavors that we've done in today's class. I hope you all enjoyed today's class. And the flavors I tried to that I've taken here are Biscoff and hazelnut. Like said, आप बिस्कॉफ हेजलनट के अलावा आप कोकोनट ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, गनाश ले सकते हैं, नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं. You can use any flavor of your choice. You can also put some fresh fruit pulp, some pieces of fresh fruits inside, choco chips. You can also put
some layers of biscuits if you don't know how to make sponge. And with just some simple techniques, you can make beautiful waffle cone cakes like these. Okay. So I hope you all had fun in today's class, because I absolutely had fun. And after working out, I am going to be having the pink one. And just let me know, just drop in the comment box and let me know कि आपका personal favorite दोनों में से कौन सा है, so that we will know which one is whose favorite. So yes, ladies, let us know कि आप लोग को दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा. मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं. मुझे दोनों मिल जाए मैं दोनों इसको खा सकती हूँ. ऐसी कोई बात नहीं है. I am in love with both of them. You let us know कि आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है. Yeah, which one is your favorite? I really love both of them, but I guess maybe the colorful one. I am more of more and more colors. More colors? Yeah. That's nice. So this also has its own, own class, I can say. Yes. कि ये भी अपने ही way में अच्छा है. But after looking at this, थोड़ा, we shift our vision to this one because this is more colorful. Yeah, if right? my sister would be there, she'd be having that pink one. I'm quite sure of it. And Yeah. I will be more of that colorful person. Yes, So, that's right. So That's good. there's one question here, doctor. The question is that, ma'am, if you're using fruits and fruit pulp, will it not make the cone a little soggy? So it will make your cone soggy. If it has to make your cone soggy, it will make with your biscoff or with your hazelnut also. But filling is absolutely mandatory. And like I said, आप ये cones बनाते हैं तो आप इस तरीके के waffle cone लीजिए, because these are comparatively thicker and these don't become soggy very easily. So आपके जो normal thin crust वाले जो cones होते हैं जो आप hawker streets पे देखते हैं वो हल्के पतले होते हैं, तो उसमें तो अगर आप स्प्रे भी करेंगे water on your sponge, they'll start becoming soggy. So my personal suggestion for these sort of cakes would be, you should use a waffle cone cake instead of your regular the patla cone, right? So if you use waffle cone, they are quite thick. Okay. Okay. So yes, I think सबका ही आंसर यहाँ पे ये था both. We all are like ऐसा हो गया कि कौन सा वाले दोनों चाहिए दोनों. So yes, this both looks absolutely stunning, and I guess it was really an amazing class, Dr. Krishna. Everybody here is drooling over what you have made here, and it was absolutely an amazing class. So thank you so much. And yes, ladies, please don't worry, आपको pictures मिल जाएंगी. आपके ऊपर recording आपके ऊपर है, PDF आपके ऊपर है, हर चीज आपको आपके ऊपर मिल जाएगी, और आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस कोर्स के लिए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड क्योंकि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर भी कर सकते हैं. So yes, Dr. Krishna, thank you so much for this amazing class. Thank you, Saloni. You were such a great host and so motivating. Thank you so much. And I'm sorry for being late because I'm just a little unwell and I had also gone out. But anyway, thank you so much for having me. I thoroughly enjoyed teaching, one of my own invented category of dessert. I hope you all enjoyed it too. Looking forward to see you all in the other classes as well. Thank you so much, Team Pankhuri. And thank you so much, Saloni, for having me. Thank you so much, Dr. Krishna. It was absolutely pleasure having you here. So thank you so much and hope you have a great day. Thank you. Bye-bye. Bye, everyone. Bye-bye. So yes, everyone, we hope that you really liked today's session. If you did, please go on Play Store and rate us and review us there, because that is something that motivates us a lot. And उसी की वजह से हम आपके लिए इतने सारे अच्छे सेशन और इतने अच्छे ट्रेनर्स ला पाते हैं. तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के हमें रेट करिए एंड रिव्यू करिए. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस एट दिस पॉइंट. So please go there and rate us and review us. You can also help us and promote us by subscribing to the YouTube channel. So please subscribe to the YouTube channel, and we come live twice a week. So